कि फौजी को पैसे मिलते हैं, they get cardiac arrest, they get vomiting, mountaineering sickness, things like that. सो अमित सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे कि आपकी, हम समझते कि आपकी पोस्टिंग फिलहाल में कहीं राजस्थान में हुआ है या कोई ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे गर्मी बहुत है, एंड हम्म, मान लेते हैं आपकी कहीं एक पोजीशन कश्मीर में हुआ है। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि वेदर कंडीशन टोटली डिफरेंट है, कहीं पे ठंड ज्यादा है, कहीं पे गर्मी ज्यादा है। तो हम्म। ऐसे जगह पे अगर हमारी पोस्टिंग होती है, लाइक गर्मी से ठंडी के जगह पे, ठंडी से गर्मी की जगह पे, दैट टाइम ये क्या टफ होता है आपको अडेप्ट करने के लिए, या ऐसी सिचुएशन में काफी आई कैन से कैजुअलिटीज भी होती होंगी बिकॉज ऑफ सम वेदर कंडीशन और अनसुटेबिलिटी? सो व्हाट्स योर थॉट? See, to be very frank, I'll tell you a true story what happened. Today I am posted in Ladakh. Prior to this, I was posted in Gopalpur, that is nearby Bhubaneswar. ओके। So Bhubaneswar, Gopalpur was already very humid. ठीक है, and now in Ladakh, the temperature goes up to minus 35 to 40 degrees in winters. ओके। जहाँ पे मैं हूँ, the height of that location is 16,000 feet, 16,000 feet. ठीक है, so it is quite high. And next, most probably I'll be posted somewhere in Rajasthan. तो ये तो मैं ऑलरेडी जूझ रहा हूँ. इट्स नॉट कि नहीं नया है मेरे लिए, बट इट इज ऑलरेडी देयर. बट देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री इंडक्शन ट्रेनिंग, wherein prior to going to a place, for some month you acclimatize about the temperature of that place. The acclimatize ka you get trained for that place basically. ओके। That is basically for high altitudes and not for low altitudes. When you go to places like Kashmir or Ladakh or Sikkim or Arunachal, so these places have mountainous terrain. So due to this, you are trained, and there's a proper procedure in Forge. Just say I would actually like to bring out this thing, which is very important for people like you and others who are out there who plan to visit Leh. What happens since you are traveling at a height of 10,000 feet, then वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल goes down. This is not with the case in Sikkim and Arunachal because वहाँ पे tree cover है, tree line है, तो oxygen is enough. But when you talk about Ladakh, वहाँ पे it is completely barren. The ओके। tree line is very less. So there is no trees. Basically, रोहतांग टनल क्रॉस करने वाले आपको पेड़ नहीं मिलेंगे. So oxygen level goes down. Second, temperature is very low. So आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठंड लगेगी. हाइट ज्यादा होने के कारण आपका बीपी बढ़ेगा. So you are at risk of cardiac arrest, oblique acute mountaineering sickness. ओके। So what we do in army, we generally when we move, so there's a procedure called as acclimatization. ओके। तो 10,000 फीट पे आप 6 दिन रहते हो, ठीक है. फिर जब आप 12,000 पार करते हो तो उस पे आप 4 दिन रहते हो. फिर जब आप 15,000 पार करते हो तो वहां पे आप 4 दिन रहते हो. So on each of these 6 days, your BP is taken. Sixth day, your BP, blood test, everything is done. It should be normal. Same goes for the next 4 days. उसमें जब fourth day है, your BP should be normal. So that is why how you get fit for high altitudes and you get placed. What happens with civilians is like आप घूमने आए ले 4 दिन की छुट्टी में लॉन्ग वीकेंड, जैसे अभी 15 अगस्त है तो आपने 14 छुट्टी ले ली, 12, 13, 14, 15 4 दिन. That is your plan. Now when you come on 12th, you reach Leh, that is 10,000 feet. You are coming by flight, so you are traveling from sea level to 10,000 feet. Next day you plan to go to Khartungla. Khartungla is 17,000 feet. ओके। So due to which a lot of people have cardiac arrest. I will give you the latest example. Pepperfry co-founder suffered a cardiac arrest in Ladakh, जो 2 दिन पहले की बात है. Now this is not because he was unfit. It is because since he did not acclimatize properly, so there have been cases where people when they just suddenly move to different temperatures, they get cardiac arrest, they get vomiting, mountaineering sickness, things like that. So it is always advisable कि कभी भी आप ले आते हो घूमने के लिए तो एटलीस्ट हैव अ 6-7 days का ट्रिप. 2 दिन टेक रेस्ट इन ले, ताकि आप थर्ड डे जब कहीं बाहर घूमने तो आप फिट रहो. ओके। ठीक है. दैट इज दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग अबाउट बिकॉज ऐसे बहुत है जहाँ पे फौज रिकवर करती है लोगों को. लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, ऑक्सीजन मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं बिकॉज सांस आ नहीं रही है, बॉडी ले नहीं रही है. एंड लास्ट ईयर की बात है, देयर टोटल 28 कैजुअलिटीज इन पैंगोंगसो इटसेल्फ, ओके। जस्ट बिकॉज पैंगोंगसो इज एट अ हाइट ऑफ रफली 14-15,000 फीट. 14,000 फीट पे पैंगोंग है, 14, हाँ 13-14,000 फीट पे पैंगोंग है. एंड मैं पैंगोंग से और ऊपर हूँ, बट पैंगोंग है 13-14,000 फीट एंड ले 10,000 फीट पे है, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाते.
इसी कारण से फौज क्या करती है, जनरली पोस्टिंग्स तो आती रहती हैं, बट यू हैव प्रोसीजर्स इन प्लेस कि आप फिट हो जाते हो. Whenever you come from a high altitude area, you don't run for next 30 days. ओके। आप बस वॉक करते हो, जॉग करते हो. बेसिकली आपके पीटी टेस्ट नहीं होते हैं, फिजिकल टेस्ट नहीं होते हैं, बिकॉज यू गेट टाइम टू एक्लेमेटाइज योर सेल्फ. यस। सो बिकॉज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन दिस विल ऑलवेज बी देयर. आप ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी में जाओगे, बट प्रिकॉशंस आपको लेना है, एंड देयर आर प्रोसीजर्स इन प्लेस वेयर इन थोड़ा आपको कंफर्टेबल रहे. ओके। सो दैट इज हाउ वी डील विद थिंग्स इन आर्मी. नाइस नाइस कि जैसे एक पर्सन है उसकी बॉडी भी उसे अडेप्ट कर पाए एंड साथ बिल्कुल ही साथ उसको हम झेल पाए। फिट रहे वो, बिकॉज आप कैजुअलिटी नहीं ले सकते ना. So that is why whenever someone comes down, अभी मैं ऊपर बैठा हूँ, tomorrow I will go down, तो I will not go for tests for first 30 days. यस यस। हम walk करेंगे, jog करेंगे, that is how things will happen. 30 days hence, I can start going for tests. So कूल। initially I get 30-45 days for body, and generally what happens when you go back to unit, तो आपको यूनिट भी लीव देती है. आपको 1-2 महीना दे देती है कि तू ये क्वार्टर मत दौड़ना, नेक्स्ट क्वार्टर यू रन. तो आपको 3-4 महीने मिल जाते हैं आपकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए. तो धीरे धीरे 1 महीने में आप एडजस्ट हो जाते हैं. कूल। जस्ट एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो इट्स अ फॉर्मल और इनफॉर्मल क्वेश्चन, बट मुझे आपसे पूछना था कि जैसे आप मॉम डैड तो ठीक है कि कन्विंस हो गए कि राइट नाउ यू आर लाइक वर्किंग इन आर्मी और यू आर वर्किंग फॉर द नेशंस, बट जो खुद की फैमिली होती है लाइक आपने कुछ टाइम पहले बोला कि वाइफ के अगर जैसे अभी का कुछ टाइम है तो मेरा साथ में रहना ज़रूरी है, तो एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो घर का माहौल होता है तो उस चीज को कैसे आप फेस करते हो, लाइक एक तो है हमें कि वहां जाके लड़ना है देश की आई कैन से सेवा करना है, बट एक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस बीच में आपका क्या करना है। सी, मैंने इसकी गाड़ी एक पोस्ट भी डाला था अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे. एक्चुअली इफ यू सी, ओके। generally it's not about me, it's about the lady wives. Generally they are quite strong, if not they become. ओके। It is, that's the way it is. ठीक है. My wife is supposed to be independent in all ways and means. अपना काम उसे खुद कर लेना है. She manages things, and that's how things are. And it's not about my wife, it's about any lady has to be that way. Because you know, when you get married to an officer in the army, or not even officer, be it a Jawan, JSU, anybody, someone who's serving in the forces, be it army, air force, or navy, it comes to a price tag, and you will have to pay the price. There is no second to it. यस। So whenever you get married, you make that choice that yeah, you know, since I married my love, I would say we were coupled together in a courtship period prior to getting married. So we were very clear with a lot of things. किसी जॉब करना है, नहीं करना है, what will the problems that you will face, what things you need to do on your own. So are you willing to accept things like that? So you know, when you make that choice to be with someone, you know, is serving somewhere, so you take a conscious call. It is difficult, it's not easy, it's very difficult. In fact, there are a lot of sacrifices to be made, there are a lot of hard decisions to be made, but then that's the way it is. It has to be made. कूल। There is no second guessing, there's no second choice, there's no option to it. यस। ठीक है. बट लिटरली आई थिंक इट्स अ ग्रेट वन फॉर द वुमेन, जैसे कि आई एम नॉट लाइक कंपेयरिंग एनी मेन और वुमेन की, जैसे अगर वुमेन भी एक आर्म फोर्स में हो या कोई सर्विस में हो, पब्लिक सर्विस में हो, लाइक अगर वो डॉक्टर भी हो, एंड दैट टाइम इफ बोथ द पार्टनर्स लाइक एक दूसरे को समझ के वो चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो लिटरली इट्स आई कैन से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन फॉर एवरीवन। Actually, that is why मतलब I rarely post on LinkedIn. मैंने सिर्फ I created an account just to have awareness of the world. Like we in army are not allowed to use social media. We don't use Instagram. We don't use Facebook. So I had only option of LinkedIn, Twitter, and YouTube. So these are three places I can be. So even we can't post at these places. That is the issue. ओके। So I joined LinkedIn. I posted a thing about my wife because I felt that she deserves it. यस यस। It's a kind of situation, and it's about any military wife, and it's not about our country. It's about the whole world. If you see the organization,
is such in any country. Like in US, people go to Iraq, people go to Afghanistan, people go to other overseas. Basically, they're not even fighting their war. Okay, they're fighting other people's war, but still they go, and the Yes. family is behind. You don't have an option. Same is with us. I don't have an option. I can't bring my family with me. I know that if I go, I'll be out for 3 4 months. That's the way things are. Last year, I went out in June and I came back in December. So that's the way things are. You know what happens in some time, after some time, after 1 year, 2 year, you realize this has become the norm. So once it has become the norm, you don't think about it. Yes, yes. You just live with it. Yes. And That's how things are actually. यस, अभी सर एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, Uh, लाइक अभी हम देखते हैं, लाइक अगर मैं ऐसा बोलूँ कि mm, नंबर ऑफ पर्सन डूइंग सम वर्क, नंबर ऑफ पर्सन इज इन आर्मी और नेवी, सो mm, आपको कैसा लगता है जब आप पूरे कलीग्स में मिलते हो, अपने दोस्तों में मिलते हो, एंड उसमें आप सिर्फ एक समझ दो कि मिलिट्री से हो, या mm, you are the one who is serving for the nation and who is working something for the nation, like corporate sector mm, में भी लोग work करते हैं, they are mm, also doing their work, like they are paying the taxes for the government, and mm, जैसे हर जन का एक responsibility होता है, but mm, I think कि जो आर्मी में है या एयरफोर्स में है, जो नेवी में है, दे आर mm, डायरेक्टली सर्विंग टू द नेशन. सो व्हाट्स योर थॉट, लाइक अगर आप कहीं जाते हो तो उस बीच में कैसा रिएक्शन होता है? See, I will talk about this thing. To be very frank, this country remembers, nationalism on only 2 days. That is Independence Day and Republic Day. ओके. 2 दिन ही देशभक्ति आती है पूरी देश को. ठीक है. आप उस दिन देखोगे स्टेटस सबके भरे पड़े हैं. थिंग्स आर देयर. To be very frank, ठीक है. I don't say कि everybody should be a hardcore nationalist like Japan. We are not Japan. We are a broad-minded people. हम वैसे रहे हैं. It's a good thing. Everybody is doing their bit. I don't say कि I'm doing something extravagant. ऐसा कुछ नहीं है. सभी अपना अपना काम कर रहे हैं. The only thing is कि bearing the profession of arms, where you know things are different, things are difficult, where you see life and death. You actually see life and death. I will give an example. Simple. तूने कंपनी में जो डेटाबेस वाला थिंग happened, max that can happen in your company will incur some losses and it will be recovered soon. If anything goes wrong on my behalf, my losses will come in dead bodies. ओके. I can't afford to do that. So due to this reason, I personally feel कि people give us that due respect. लोग मुझे नहीं भी जानते हैं, but just they know कि हाँ मेरा नाम मेजर अमित है. I am just known by मेजर अमित. So they have that due respect for me. यस. तो डोंट गिव मी एन एक्स्ट्रा प्रिविलेज कि मुझे ट्रेन में लाइन अलग नहीं लगती मेरी कि मैं अलग जाके खड़ा हो जाऊं. सुपर मार्ट में जाके मैं फर्स्ट में खड़ा होकर सामान नहीं खरीद सकता. आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा प्रिविलेज फॉर दैट मैटर. बट it is just that when you speak with people, when you speak to people who are in corporate or like in any civil background, basically, they will give you that due respect. यस. Even in bureaucracy, if I go and speak to a DC of a district, या DM से मिलने आता हूँ magistrate से, and I tell him कि I'm so and so, I wanted to speak to you. So there are a lot of people who give you the disrespect and tell you कि आप बैठिए, let's have a coffee and discuss क्या प्रॉब्लम क्या है. यस. यस. मे बी अगर आप गूगल के सीईओ हो तो भी आपके पास ये चीज ना आए. ठीक है. पॉसिबल आई कुड से कि यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड यू आर वर्किंग रफली यू गेट अ वेरी हैंडसम सैलरी. फौज में यू डोंट गेट अ हैंडसम सैलरी. टू बी वेरी फ्रैंक, नोबडी. एक स्टेटमेंट आया था किसी मिनिस्टर का कि फौजियों को पैसे मिलते हैं. नहीं, फौजियों को उतने ही पैसे मिलते हैं जितने सारे किसी भी सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं. कुछ अलग नहीं मिलता है फौजियों को. ठीक है. इट इज सेम. But we face much more hardships than any other place. कूल. But that is converted in the form of respect we get. यस. You यस. meet with people. अभी I just 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी. I give you an example. I went to a marriage of a friend of mine. Her mother introduced me to everybody in her family. ठीक है. I don't know even any of one of them. I have met her mother. I have met actually पहले मैं मिला था. Her mother knows me. I know her mother.
but I don't know anybody else. But her mother introduced me to everybody in the family, stating कि फौज में, फौज में, फौज में. She was not so conversant with the fact कि I am at what rank, I am at what place. So just she used to say कि ये अभिजीत का दोस्त है, ये आर्मी में है, अच्छी पोस्ट पे है. That's it. Cool. So people who knew asked me what if my rank was, where I am posted. But that was the way people treated me, and I felt good. Nice. वो कहते हैं कि what I can't earn in money, I earn in form of love and respect. Yes, yes. Actually, Kerala floods, Uttarakhand floods, ठीक है, J&K riots. So people give you the due respect. People hold you in very high regards. Nice. I have seen that happening. आप स्कूल में जाते हो, बच्चों से मिलते हो, they aspire to be like you. Nice, nice. ठीक है, nobody aspires to be a software developer, I would say initially, unless and until वो जॉब अच्छी है. But people look up to you. Nice. मतलब अगर and the best part I would say prior to getting married when I used to speak to girls, other girls, for that matter anybody in train or any person, you know, they had that thing in mind कि ठीक है बंदा अच्छा है, may or may not be कि I am good, may or may not be कि That is my secondary thing. fraternity people are good or not, but since that wearing the uniform stamps you कि that you are a good person. Yes, yes. अंदर क्या पता नहीं, but that is what you get. First impression. Yeah. हाँ, first impression. Apart from that, the lot of boys, since being an officer has some other perks, कि ये तो सारे फौजियों के लिए हो गया. But you being an officer, you will have that privilege कि there will be jawans who will be coming up to you, jawans the age of your father, asking कि सर मेरे बेटे को क्या कराना है, क्या कराना चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा, आप ऑफिसर हो. They aspire their sons to be you. So if someone aspires to be you, it's the greatest achievement you can have. Yes. ठीक है? That is the greatest inspiration that you can be for a person. कि someone is aspiring to be you. Me, I may be just a face sitting here, but a faceless identity in a uniform is the person that people aspire to be. Yes. ठीक है? Actually, that is. Yes. सर काफ़ी सो थैंक यू अमित सर, ये जितना भी आपने आपका एक्सपीरियंस, ये जितना नॉलेज शेयर किया है, डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगा सभी को. आई नो कि जो स्टोरी है, जो जर्नी स्टोरी है, जो करियर स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, बट वी हैव सम टाइम रिस्ट्रिक्शन. सो एंड टाइम लिमिट तो उसी के लिए अपने को थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा इसे. बट डेफिनेटली अगर हमसे व्यूअर्स इस पे ज़्यादा वीडियोस मांगते हैं, लाइक दे वांट टू नो मोर डिटेल्स अगर वो चाहते हैं, डेफिनेटली विल क्रिएट वीडियो एंड विल डेफिनेटली प्रोवाइड देम. बट बिफोर दैट वी हैव 3 क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा है आपसे. एंड पहला सवाल है वैभव भस्मे की तरफ से, तो मैं एक एक करके आप बोलते जाता हूँ, आप उसका जवाब Please. दीजिए, ठीक है? सो पहला सवाल है वैभव भस्मे की तरफ से. तो इनका ऐसा कहना है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अग्निवीर स्कीम? इट इज रियली गोना हेल्प सोल्जर्स इन लॉन्ग टर्म? See, Agniveer के बारे में, to be very frank, I am not a spokesperson of the forces, so I will not tell you that way. However, in personal opinion, I am saying something. It's a good scheme. See, पहले भी फौज में लोग आ रहे थे, अभी भी लोग आएंगे. The only difference that will happen is कि 25% of them who want actually to continue will be absorbed. ओके. तो सिंस 25% तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो दे विल बी हार्डकोर पीपल. अभी क्या होता है कि लोग आ जाते हैं, जैसे कल तक ये हो रहा था, जो भी आ रहे थे भर्ती हो रहे थे, नाउ दे आर इन फौज. छोड़ तो सकते नहीं, निकाल सकते नहीं, बट अभी एटलीस्ट यू विल हैव एन ऑप्शन टू फिल्टर आउट पीपल एट अ वेरी यंग स्टेज. सेकंड ऑप्शन is since the person who are coming, the rest 25% of them, they're getting a good amount of money. जो after that सम्मान निधि जो उनका है, they're having that package. And second, they have an exposure of army, so they would be a better disciplined kind of thing. Because we as an organized country cannot have conscription कि सभी को फौज में भर्ती करा दो. But someone who has gone through फौज have seen the hardships, तो उनको थोड़ा exposure रहेगा, तो उनके दिमाग में थोड़ा better groomed रहेंगे in a way. सो बाहर जाके भी काम करने का ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि वो भर्ती बहुत कम एज में 17 से 19 की एज में भर्ती हो रहे हैं. तो बाय द टाइम दे लीव फॉर दे विल बी 23 में तो लोग ग्रेजुएट होते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं. यस, यस. सो बाहर भी उनके पास स्कोप है पूरा, वर्ल्ड इज प्लथोरा
of options are available to them. So it's a good scheme, in my opinion. कूल. एक हमारे व्यूवर्स है ऐश्वर्या पाटिल की तरफ से एक क्वेश्चन है कि चाइना हैज ऑलवेज बीन यूजिंग सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंक्रोचमेंट. व्हाट्स Mm. आर आवर प्रिपरेशन फॉर दिस. एंड उन्हीं का सेकंड क्वेश्चन है, also would like to know military's view on Aksai China area. See, I'll deal with these two things separately. Mm-hmm. First, I'll talk about China and Salamis icing. See, me being posted at a place where we are close to the LSC, actually, line of actual control with China. So, government has taken steps, and currently army is deployed everywhere Okay. to counter Chinese claims. Mm-hmm. Chinese have always been claiming. They claim in Mongolia, they claim in Japan, they claim Korea. हर जगह claim करते हैं. उनका काम है. Mm-hmm. But you can't avoid that. Yes, yes. But government has taken a strong stand towards it, and we are at places, we are at everywhere to avoid these things from happening. Salami slicing and things like that have come up in news a lot of times, but ground reality is not known to anyone. To Okay. be very frank, Mm-hmm. it's if people read history, they would come to know what things were and what things are. Mm-hmm. Okay? We are deployed at places to avoid these situations. Okay. Currently, army is there, Mm-hmm. and it will always take care of things like this. So there is no need to worry about it. Second, regarding Aksai Chin. Mm-hmm. Aksai Chin has been always a controversial issue, and it's not a military level issue to deal with. It's a diplomatic and political level issue. Yes, yes, yes. ठीक है? So we are not involved with in any. We are given orders to stay at post. We stay at our locations which have been earmarked for us, and the government in its talks in diplomacy has to solve this issue. Okay. अब इट कांट हैपन ओवरनाइट कि आप बोलो अखैचिन ले लो, अखैचिन ले लो कि गवर्नमेंट बोलेगी तो हम ले लेंगे, हम जाएंगे. Yes, It's as yes. simple as that. Yeah. But that is not army's call. Mm-hmm. It's a political and diplomatic issue. एक किसी भी अभी रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया बीइंग अ पावरफुल नेशन हैज गॉट गट्स कि हम यूक्रेन में कब्जा कर लेते हैं एंड क्या बोलते हैं जो भी सैंक्शंस आएंगे हम देख लेंगे. Mm-hmm. इंडिया कांट अफोर्ड टू डू दैट. So there are a lot of other things that come into play. Me, I'm not a क्या बोलते हैं उसको diplomat or a foreign military strategist, so I'll not be able to say that question. But however, I would just assure people that Mm-hmm. army is deployed at a lot of places. It's available throughout the borders of the country. So I can assure you that no ground has been lost and no ground will be lost. Yes, yes. Thank you, sir. And Mm. one more question from Vishal Sipaiya. How Mm. was the experience in Ladakh? To be very frank, for people, it's a tourist destination. For us, it's a bit difficult. Okay. I had never seen snow in my life. Mm-hmm. I first time saw snow for a lot of time in my life, and I'm done with it. Yeah. I have traveled in convoys which rather take 4 hours in summers, but take 8 to 10 hours in winters Mm-hmm. because snow पे snow chain लगती है. Mm-hmm. टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड. बीपी इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं. आई हैव सीन डेथ्स, people dying because of the weather conditions. So it was not a very pleasant experience, I would say. The place is beautiful. People are always welcome Mm-hmm. to roam around and enjoy the view. Mm-hmm. However, it is recommended that you follow the medical norms which are provided. Mm-hmm. But for army, it has always been that way. Army is army as such. Yes. We have been at the worst of places from plus 40 degree to minus 40 degree. Mm-hmm. Yeah, I have my friends in glacier who are at minus 50 degree even. So that's how things are. But yeah, that's my part of job, not to worry for you. Cool. Literally, Amit sir, thank you for your career journey as well as your guidance. एंड जितना भी आपने एक मेडिकल का भी आपने आइडिया दिया कि लाइक इफ़ यू आर गोइंग समवेयर एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल समवेयर देन क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए एज वेल एज जो आपने इम्पोर्टेंस बताया है एंड बाकी से भी चीज़ें बताई है लिटरली बहुत हेल्प करेंगे जो भी अपकमिंग जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. Just one last question from my side. Do you have any kind of specific message for the upcoming generation, for the colleague, and for the like teachers, or I can say for your parents? And do you wanna say someone thanks or like best wishes from you? See,
My life, I have always been grateful to my parents as well as my wife, who have been very supportive from the start. Okay. People have been there, otherwise, it would have been very difficult for me on my behalf to do what I am doing. And it's not about me, it's about the entire fraternity, I would say. There are people who are supporting us to be where we are. Okay. I just want one message to everybody. It's not specific to any profession, not specific to any person. It's specific to the citizen of the country, I would say. Be a good citizen. That's what we are fighting for. If the borders are safe and sound, but there is ruckus, there is violence, there is riots like Haryana mein ho raha hai ya Manipur mein ho raha hai. If these things are happening within the country by the people of the country, it's not worth it. It's not worth being at a place where everybody is just damaging their body and facing a lot of problems, so that people are safe and they don't want to be safe where they are safe. Yes. So it's not worth it. So a very simple and sweet message: just be a good citizen. Pay your taxes on time. Do your duties. Don't break traffic rules. It doesn't take a lot to be a good citizen. Like good Samaritan की definition है ना. That's it. Help people. You help people, that the country will improve on its own. Yes. हम हमारी माइंडसेट वही रहती है, चार लोग चोरी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे क्योंकि चार तो कर ही रहे हैं. वाई, अगर चार लोग नहीं करेंगे तो 400 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएंगे. Yes. Yes. ठीक है. सो दैट्स हाउ बी जस्ट बी गुड सिटीजन. दैट इज व्हाट इज माय मैसेज टू एवरीबॉडी. एंड एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. Yes. ठीक है. थिंग्स आर अवेलेबल ऑफ द इंटरनेट एज वेल. Yes. तो मैंने ऐसा कुछ बड़ा बताया नहीं जो, हाँ, अपार्ट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, what I have been through, that you will not read in any book, that you will not find over the internet, that you will not find in any magazine. That is a person's journey, or a person's life is always a person's life. Yes. There is no book or magazine or where you can find it. So I'm always there. It was a good talk to you, wherein I could bring out a lot of things for them if they find it useful. Yes. Yes. Definitely, sir. Definitely. यस थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस. आपका एक एक व्यूज, आपका एक एक आई कैन से सब्सक्राइब बढ़ना, ये मेरे लिए इतना मोटिवेशनल है कि मैं नंबर ऑफ स्ट्रीम से लोगों को आप यू कैन से पकड़ के लाता हूँ या बुला के लाता हूँ, एंड उनसे जो उनकी जर्नी की स्ट्रगल है या उन्होंने जो अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया, उसको मैं यहाँ शेयर कराता हूँ ताकि आप सभी को भी आइडिया आ सके. एंड इन फ्यूचर अगर आपको ऐसे कुछ हर्डल स्ट्रगल लाइफ में, so that you can handle it very well, or I can say you can handle it easily. So thank you everyone. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot.